Okay, next we will try to solve the problems. ठीक है। अगर i पावर ग्रेटर नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे i पावर 401 है, i पावर 5203 है, i पावर -201 है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे। ओके, अब हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे वो देखने वाले हैं। तो एक मेथड है, एक इजी मेथड है करने का। पहले ये नोट आइडेंटिफाई करो कि i का पावर क्या है, इवन है या ऑड है। ठीक है, तो इफ i का जो पावर है वो इवन है, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक i पावर 22। okay, i power 22, then we will solve i power with the same logic. We will solve i power 36, then we will solve i power 202। okay, so ये अगर हो गया तो समझ में आ जाएगा। so i power 22, so i power 22 can be written as इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए, पता होना कि what is i square। I square is -1, and you should know this. What is I square? Okay, so I power 22 can be written as, I can make changes into this power, so I can write it as I power 2 into I power 11. Sorry, I power 2, I power 2 into 11। ठीक है, हमें लिख सकते हैं इसको ऐसा। So basically क्या किया, basically I have written I square, ठीक है, एंड बचा वाला को बाहर लिख दिया, या फिर बोले तो 22 को 2 से डिवाइड कर दो और जो बचा जो आएगा वो बाहर लिख दो, दैट इज 11। ठीक है, वी कैन डू इट लाइक दिस। सो व्हाट इज आई स्क्वायर इज -1। ओके, सो -1 का पावर 11, दैट इज -1। ठीक है, सेम लॉजिक विल अप्लाई हियर, दैट इज आई कैन राइट आई स्क्वायर, सो बचेगा कितना, 18, because 2 into 18 is 36, 2 into 11 is 22। मेरे को अंदर में आई स्क्वायर रखना है, अंदर में आई स्क्वायर रखना है, जो बचे रहेगा उसको बाहर रखना है। ठीक है, क्योंकि आई नो आई स्क्वायर विच इज -1। सो आई स्क्वायर इज -1 पावर 18, -1 पावर 18। okay, now 18 is a even number, -1 का पावर even number is 1। okay, next we will solve I power 202। so I power 202 मतलब I square, so 2 into क्या मल्टीप्लाई करने से 202 आएगा, 101। okay, so 2 into 101 is 202, so I square is -1, -1 का पावर 101, so its answer will be -1 itself। ठीक है, -1 power odd is -1, -1 power even is 1। okay, you should know this, you should know this। okay, so ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे अगर i का पावर ऑड, i का पावर इवन होता है तो। next let me take some bigger number, that is i power 4205। ठीक है, 4205, oh okay, it is a odd, it is odd। okay, let me take I 4204। okay, so 4204, so I square, I power 2, so remaining that is कितना मल्टीप्लाई करने से 4204 आने वाला है, कितना मल्टीप्लाई करने से 4204 आने वाला है, so basically divide 4204 by 2। okay, divide 4204 by 2, तो मेरे को मिलेगा, 2102। okay, now I square is -1, -1 power 2102, this is even now, -1 power even is 1। okay, now let me take I power, a negative number, let it be I power -20 or 226।
I power minus 2 to 6. So minus 2 to 6 can be written as 1 by I power 2 to 6. I power 2 to 6. I can write this. Now I will use the same logic here इतना में. ठीक है, तो कैसे लगाएंगे? 1 upon I power 2 into 113, क्योंकि 2 into 113 will be 2 to 6. Okay, so I know again I square minus 1 power 113, that is minus 1 power odd is minus 1. Final answer is minus 1. Okay, is that clear? So we can take some more example. I power minus 110 minus 1120. Is that okay? Minus 1120 मतलब I power 1 by, I can rewrite this 1 by I power 1120. Okay, so it will be 1 by I का power 2 into कितना मल्टीप्लाई करने से 1120 आएगा, और डिवाइड 1120 by 2, जो कितना आएगा 2 5 10, 2 is 2 0. Okay, so 1 by I का square is minus 1 560. I power sorry, minus 1 का power 560 is a even number, so minus 1 power even number is a 1, so 1, answer is 1. Okay, like this we have to solve. Now let's take some example for odd numbers, I power odd numbers. ठीक है, let me take some example of I power odd number. Now shift this here, shift this here. Next we'll do some odd numbers. Let me take I power 23. How to do I power 23? For odd number we have to separate an I. हम लोग को एक I को अलग करना है. I power 22 into I, एक I को अलग करना है. तो इससे क्या होगा, ये जो रहेगा इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लास्ट पिछले लॉजिक से. ठीक है, I power 22. I power 22 can be written as I power 2 into 11. पावर्स में हम लिख सकते हैं 2 into 11. Again I know that I square is minus 1 power 11. So I know I square is minus 1. So minus 1 power minus 1 power 11 is minus 1. Minus 1 into I is minus I. Okay. Now let me take some bigger example. I power 401. I power 401. I can rewrite it as I power 400 into I. ठीक है, मेरे को एक ऑड में क्या करना है, एक I को अलग करना है, हमेशा एक I को अलग करना है. ओके, सो एक I अलग कर देगा तो क्या बनेगा, I पावर 400 बन जाएगा. नाउ आई कैन सॉल्व दिस यूजिंग द प्रीवियस लॉजिक. ठीक है, सो क्या आएगा, I स्क्वायर इंटू 200, क्योंकि 2 into 200 is 400. Okay, into I. So I square is minus 1 power 200 into I. ठीक है, so minus 1 का power even number is 1 into I is I. ठीक है, so this is the final answer. This is the final answer. Now if there is a I power minus 5031, I power minus 5031, how to solve this? Again same logic. What we will do 1 upon I power 5031. ठीक है, now हम क्या करेगा, डिनोमिनेटर में एक I अलग कर देगा, तो 5030 into I. Okay, now I power 5030 can be written as I power 2 into 2515. Okay, so what did I do? हम क्या किया, यहाँ पे 5030 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे ये मिला. ठीक है, now 2 into 2515
will be 5030 into I. So now I square is minus 1. Minus 1 power odd is minus 1. Minus 1 into I is minus I. So डिनोमिनेटर में 1 upon minus I. डिनोमिनेटर में minus I रहेगा सिर्फ. Now we know that हम लोग कल देखे थे. क्या देखे थे हम लोग कल देखे थे that I power minus 1 is minus I. So this is also can be written as 1 by I is minus I. Okay. This is another form of the result. What? 1 by I is minus I. 1 by I is minus I. We will use the logic here. 1 by I is minus I. So minus into minus I. In place of 1 by I have placed minus I. So answer is I. Okay. So in this way we have to solve. We can solve. Okay. There is another way that is better. That is very simple way. So this is how we can solve. This is the one way we can solve I power any integer. Okay. If I power any integer means, so integer can be written as integer can be divided as even or odd. If it is even, so if it is even, we have to solve. We have to what we have to do. We have to write in terms of I square. ठीक है. I square then बचा वाला पावर बाहर में. ठीक है. I square then बचा वाला पावर बाहर में. ठीक है. I square बचा वाला पावर बाहर में ऐसा लिखे करना है क्योंकि मेरे को I square का वैल्यू पता है. I square का वैल्यू पता है. What is I square? I square is minus 1. ठीक है. We have to use this logic for even, and for odd the simple logic is we have to separate an I. So if power is an odd number, we have to separate an I. Okay. If I separate an I, the remaining, this is the remaining, the remaining will be I power even, and we know the logic for I power even. Okay. And remaining procedure is same for even numbers. So this is I, it becomes I power even. This is I power even. Okay. Okay, next we have a easier simple method to solve any I power any number. Okay, we will see that method in the next video.